Now let us understand about the OSI model. OSI model is the model कि अगर आपकी एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहती है, सो सपोजिटली इस डिवाइस पे हमें भेजना है हाई, इंस्टाग्राम पे वी आर सेंडिंग हाई टू अनदर डिवाइस, ठीक है। अब ये हाई जो है वो पूरा इस नेटवर्क से कम्युनिकेट होकर इस डिवाइस तक पहुंचे, ठीक है, एंड इंस्टाग्राम पे आपको हाई रिसीव हो, ठीक है। सो अब इस प्रोसेस में जो जो आपके लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, हाउ दिस होल कम्युनिकेशन हैपेंस, ठीक है, उसको गवर्न करता है ओएसआई मॉडल, ठीक है। ओएसआई मॉडल बेसिकली व्हाट इज इट्स पर्पस? इट्स पर्पस इज टू शो हाउ टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स without requiring the changes to the logic of the underlying hardware of the software। मतलब क्या? अभी इंस्टाग्राम हम लोग मोबाइल से भी चला सकते हैं, वी कैन यूज इट वाया डेस्कटॉप ऑल्सो, वी कैन यूज इट वाया लैपटॉप ऑल्सो, ठीक है। अब अलग अलग डिवाइसेज है, कम्युनिकेट करे, और इंटर कम्युनिकेशन भी हो सकता है, एक जना मोबाइल पर है दूसरा लैपटॉप पर है, ठीक है। अब इंटर कम्युनिकेशन डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में भी हो सकता है, बट whenever you want to send a message without knowing the underlying hardware and the software, आप कम्युनिकेट कर सकें, इस चीज को इंश्योर करता है ओएसआई मॉडल, ठीक है। ओएसआई मॉडल के कितने लेयर्स होते हैं? वी हैव 7 लेयर्स इन द ओएसआई मॉडल। कौन कौन सी? स्टार्टिंग फ्रॉम द लोवेस्ट लेयर टू द हाईएस्ट लेयर, ठीक है। लोएस्ट लेयर में हमारे पास आती है फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, देन नेटवर्क लेयर। हाईएस्ट लेयर्स में हमारे पास आते हैं सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। This transport layer is also called as the heart of the OSI model because it take care of the end-to-end responsibility. How it works हम लोग एक एक लेयर के बारे में डिटेल में अभी फर्दर देखेंगे। But how many layers are there in the OSI model? 7 layers. These are the layers. ठीक है। अब ये आपस में इंटरकनेक्ट कैसे कर सकती है? Supposedly we have a device A, okay, and it wants to send data to device B, ठीक है। अब पहले कोई भी मैसेज है, हाई मैसेज हम लोग ने एक इंटरफेस पे लिखा, इट विल पास टू द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर से इट विल बी सेंड टू द एप्लीकेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर इंटरफेस विच इज कॉल्ड एज द 7th लेयर एंड 6th लेयर इंटरमीडिएट इंटरफेस, ओके। देन उससे वो प्रेजेंटेशन लेयर पे जाएगा, सिमिलर वे में उसके इंटरफेस से पास होके सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर से जाते ही इट विल ट्रैवल अक्रॉस द मीडियम। The moment it is being reached the destination B, तो फिर physical layer will receive it and then it will pass it to the upper layers. So this is how the flow happens. So आपका data जो है वो एप्लीकेशन लेयर से ट्रैवल होकर लोअर लेयर्स तक जाएगा एट द सेंडिंग टाइम, एंड रिसीव होते टाइम लोअर लेयर से अपर लेयर्स तक जाएगा, ठीक है। और हर एक जो लेयर है वो उनके बीच में एक इंटरफेस होता है जो कि आपस में कनेक्टिविटी और ट्रांसफर ऑफ द डेटा एंड फॉर्मेशन ऑफ द डेटा उसको गवर्न करते हैं, ओके। सो दिस इज हाउ द इंटरकनेक्शन बिटवीन द लेयर्स हैपन, ठीक है। अब एक्सचेंज एक्चुअली होता कैसे है, ध्यान से देखिएगा। सपोजिटली हम लोग ने मैसेज लिखा हाय, ओके, एट द एप्लीकेशन लेयर, तो हर एक लेयर अपने डेटा के साथ एक अपना हेडर डालती है, ठीक है। सो सपोजिटली सबसे पहले वो एप्लीकेशन लेयर के पास आया, सो हाउ एप्लीकेशन लेयर विल लुक, इट विल अपेंड अ हेडर विद द डेटा। आई विल जस्ट मेक इट अ बिट बेटर, so it will give the data as D7 would be high and it will append the header, okay। Now this whole will become the data for the physical layer, sorry, presentation layer. This will become the data for the presentation layer D6, and now this D6 will add its own header H6. Similarly, now this becomes the data for the session layer, so it will become D7 and now it will add its own header D5 and it will add its own header H5, okay। Similarly यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जाएगा तो वो इस पूरे को डेटा समझेगा और अपना एक हेडर अटैच करेगा। Similarly now this will become the data for the network layer D3 and it will add a header to it. Now at the data link layer, this whole is the data, right? So it will whole become D2. Data link layer is the only layer, it will add header as well as trailer to the data, ठीक है। The moment it becomes reaches the data link layer, after that at physical layer this complete data will be transferred into the series of zeros and ones, and as stated this physical layer will also append its
header to it. And now this stream of zeros and ones will be sent to the medium, transmission medium. Any kind of medium will be there, wired, wireless, we will see in the further classes. Now once it reaches the destination, who will receive it first? The physical layer. The lower layer will receive the complete message first, and what it will do, it will remove its header and pass this data to the upper layer. Okay, now this data is being received completely by the data link layer. What it will do, what it has added, header and the trailer. So what it will remove, the header and the trailer, and it will pass this remaining data to the upper layer. Okay, now this complete layer is, network layer is receiving this complete data. What it has added, it has added a header. So what it will do, it will remove this header and pass this data to the upper layer. Similar way में every layer they have added a header, so they will remove a header and pass this data to the upper layer. And finally now this will be removed. Then from this side, this data will be transferred, okay, and this header will be removed. Now this data will pass. For this complete, it will remove its header and pass D7. What was D7? High. And what it will be received? High. Okay. So this is how the complete exchange happens using the OSI model. So now we will see each layer in detail in the further videos.